This is the chapter we will be studying, chapter number 8. Okay, this is your chapter number 8, comparing quantities. Okay, so now what we are going to study in this chapter, we will discuss. See, the first thing we have to look for the name of the chapter, that is comparing quantities. If I talk about comparing quantities, अगर मैं इसकी बात करूँ, what is this comparing quantities and what we will be talking about? See, comparing means what? When we are having two or more things and we are analyzing their data, that means we do what? Comparison. In our last class also, 6th standard, I also told you how to compare things. Suppose, see, if two boys are there, I will name, if I am having, suppose these are the two boys. One is this one, okay, this is boy A, and the other one is this one, this is boy B. Okay, and now I'm asking you to compare these. You can compare them on the basis of their height. तुम उनकी height के basis पे उनको compare कर सकते हो easily. That you will say, sir, A is greater than B. Okay, that is what we are doing comparison. Okay, so try to focus. We are comparing. We are comparing on different. Here we are comparing on the basis of their height. We can see the figure. The A is greater than B. Then if I am having two pizza, suppose this one is the larger one, and one more pizza I am having, suppose this one. Okay, now just see, if this is the first one I am having and this is the second one I am having, you will say, sir, the first one is greater than the, or is larger than the second one. So these are some modes we compare the things. But see, ये चीज़ें हम बहुत अर्ली एज में करते थे, दैट कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर एंड स्मॉलर, जहाँ पे हम बात करते थे छोटी और बड़ी चीज़ों की. बट नाउ वी विल बी कंपेयरिंग द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ratios. This is the thing we are going to study now. So we will study on the basis of ratio. Now what is the basis of ratio, or if we are talking about, if we are writing ratio, see, if I am having suppose this is person A, he is having 4 pen. Okay, how many pen? He is having 4, and there is some another person B. Okay, there is some another person B who is having 8 pens. Okay, you will say, you can compare these. देखो, एक चीज तुम कंपेयर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ हु इज हैविंग मोर और हु इज हैविंग लेस, है ना. एक तो हम कंपेयर करते हैं मोर और लेस के बेस पे. This is the first basis we are doing the comparison. But the second one we are comparing, that how many times this B is having more than A. 4. It is having 2 times. देखो ना, 2 times, sir. yes, B is having 2 times. क्योंकि देखो ना, A के पास कितने पेन है? 4, और B के पास है 8. So that means what? B is having 2 times of A. So I can write B is having 2 times of A. 2 times. So whenever we are talking about this kind of comparison, where we are talking कि one is having how many times of the other, okay, one is having how many times of the other, we talk about ratios. जब हम ऐसी बात करते हैं, suppose देखो एक और एग्जांपल लेते हैं. Suppose there is a car and there is a bike. Okay, एक कार है, एक बाइक है. In car the petrol we can put, हम उसमें जो पेट्रोल कर सकते हैं, डाल सकते हैं. सपोज वी कैन एंटर 35 लीटर इन वन टाइम. ओके, एक टाइम में उसमें कितना पेट्रोल आ जाता है? 35 लीटर. एंड इन बाइक में मान लो 7 लीटर्स आते हैं. ओके, 7 लीटर्स. तो दैट मीन्स व्हाट? 35 और 7. तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ना, दैट कार इज हैविंग हाउ मेनी टाइम्स? 5 times 5 times. then in bike. That is how we are going to find ratio. देखो, if I will find ratio of A to B, देखो in the case 1, जब मैं क्वेश्चन नंबर इस 1 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, if I am finding ratio of A to B, ratio of A to B, how I will be finding? How many pen A is having? 4, so I will be taking 4. How many pen B is having? 8, so I will be taking 8. So 4 1 ja, 4 2 ja. That means what? 1 upon 2, and I will write it in the ratio 1 is to 2. This is how we write the ratios.
इस तरह से हम रेशियो को लिखते हैं। सी आई एम फाइंडिंग रेशियो ऑफ ए टू बी। तो देखो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, इफ आई एम फाइंडिंग रेशियो ऑफ ए टू बी, अगर मैं ए से बी का रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूं, दैट मीन्स आई विल राइट ए फर्स्ट एंड बी इन द डेनोमिनेटर, ए इन द न्यूमरेटर एंड बी इन द डेनोमिनेटर। नाउ सी इफ आई एम फाइंडिंग, अगर मैं फाइंड करता हूं रेशियो ऑफ हियर बाइक टू कार, बाइक से कार का रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूं, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में मैं क्या लेने वाला हूं, बाइक वाला। तो बाइक कितना है 7 और कार कितना है 35। सो इट विल बी 7 1 जा 7 5 जा 1/5 आया ना, इट इज 1/5। सो हाउ आई विल बी राइटिंग 1:5। Okay, this is how I will be writing the ratio. One more thing, just see here, अगर यहीं पे इसमें क्वेश्चन होता रेशियो फाइंड करो, रेशियो ऑफ कार टू बाइक, कार टू बाइक। अब देखो ना, पहले क्या आ रहा है, कार आ रहा है, फिर बाइक आ रहा है, तो पहले हम कार वाला लेंगे। कार वाला नंबर क्या है 35 और बाइक वाला कितना है 7। अगेन वी विल कैंसल आउट 7 1 जा 7 5 जा। सो हाउ मच वी आर गेटिंग 5:1. See, if I am getting for car to bike, I am getting 5:1. But if I am getting from bike to car, that means I am getting 1:5. So whatever name is given, जो पहले स्टेटमेंट में दिया होता है, we have to take in numerator, जो later one है उसको हमें denominator में लेना है। Okay, this is the thing you will be doing. Some questions are there in your exercise. I will show you. You can see. फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 to 50 पैसे। वन थिंग आई टेल यू, एक चीज़ मैं तुम लोगों को बहुत क्लियरली बता देता हूँ, वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड द रेशियो, जब भी तुम रेशियो फाइंड आउट करोगे, वन थिंग शुड बी सेम, दैट इज यूनिट। द यूनिट ऑफ द टू थिंग्स दैट यू आर फाइंडिंग आउट द रेशियो शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए। ओके, सो लेट्स, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, द यूनिट वाइल फाइंडिंग, जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं ना, वाइल फाइंडिंग द रेशियो, द यूनिट शुड बी सेम, द यूनिट शुड बी सेम, यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब देखो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, सी इफ आई एम हैविंग, सपोज आई एम हैविंग ₹10 to 700 पैसे and I want to find the ratio of ₹10 to 700 पैसे. Now just see the units, one is in rupees, the other one is in पैसे. So that means what, हम लोगों को क्या चाहिए, we have to make the unit similar ना, so we will convert, हम किसी एक को convert करेंगे। I will convert this one, ये ₹10 है ना, in 1 rupees, if 1 rupee is there, how many पैसे are there, 100 पैसे 100 है ना, in 1 rupees 100 पैसे are there, I am having 10 rupees, so 10 rupees how many पैसे will be there, 10 into 100, sorry 10 into 100, so 10 into 100 how much, it will be 1000। देखो अब मैंने कन्वर्ट कर दिया है, दिस ₹10 इज कन्वर्टेड, दिस इज कन्वर्टेड टू पैसे, सो दैट मीन्स व्हाट, इफ आई एम हैविंग दिस वन 1000 पैसे, दिस वन 700 पैसे, सो रेशियो जब हम फाइंड आउट करेंगे, रेशियो में ऊपर कौन आना चाहिए, इट विल बी ₹10 वाला ना, लेकिन ₹10 को हमने कन्वर्ट किया है, सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 1000 एंड अपॉन 700, so 0 to 0 cancel out, again 0 to 0 cancel out, now we are left with 10 upon 7, it will not cancel out, so the answer will be 10 is to 7, so this will be our answer, 10 is to 7। See one more example we will take, leave this one, एक और example हम यहाँ पे ले लेते हैं साथ में। See suppose we are having, we have to find the ratio of 5 kilometer to 750 meters, okay, we have to find the ratio of 5 kilometer to 750 meters। now again just you can see the units are different, units जो हैं different है, one is in kilometer, one is in meter, so we will convert this thing, 1 kilometer equals to how many,
It is equal to 1000. 1000 meter. 1000 Okay, meter. so that means 5 kilometer will be equal to 5000 meter, क्योंकि we will multiply ना, if 1 kilometer equal to 1000, so 5 kilometer will be 5000. This is what unitary method हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था. यूनिटरी में क्या होता है, if we are having for 1 units we can multiply for many units. Okay, so 5 kilometer equal to 5000 meter. So now we are having this 5 kilometer we have converted into meters. इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है. Okay, so that means I can take the ratio now. The ratio will be 5000 divided by 750. So now I will cancel it out, 0 to 0 cancel out. Now we are remaining with 500 upon 75. I will cancel with 5 now. Okay, 5 1 ja 5 5 ja, then 5 1 ja 0 0. Again I will cancel 5 3 ja 15, 5 2 ja 0. So what we are remaining with, 20 by 3. We are remaining with 20 by 3 and the ratio will be 20 is to 3. ratio. So this is our answer that we will be having. Okay, let's take one more example. यहाँ पे सर हम 75 को 25 3 भी कर सकते हाँ, हैं. we can do वो भी कर सकते हैं. Okay, so let's take one more example here. Okay, suppose you are given with to find the ratio of 20 hours to 780 minutes. Okay, now just again see, the units are different. One is in hours, one is in minutes. 20 hours to 780 minutes. So again we will do the unit same. So 1 hour equals to how many minutes? 60. 1 hour equal to 60 minutes. So 20 hour will be equal to how much? 20 hour we will be having 20 multiplied by 60. Okay, so that means how much? 6 to 12, it will be 1200 minutes. We are having 1200 minutes. So see, we have converted this 20 hour, we have converted to minutes. So now we can find the ratio because we are having same units. देखो ये भी minutes में है, ये भी minutes में है. So we are having same. So it will be 1200 divided by 780. अब देखो कैंसिलेशन के प्रोसेस को ध्यान से समझना. In the end we are having 0 in both. So I will cancel out 0 to 0. So I will be left with 120 and 78. Now what I will do, I will try to cancel it out with 2. मैं 2 से cancel out करने की कोशिश करता हूँ. If it is possible, see 2 3 जा 6, 2 9 जा 18. अब ऊपर वाले को करते हैं 2 6 जा 12 एंड 0, क्योंकि देखो 12 को हमने किया 2 6 जा 12 और 0 एज इट इज आ गया, मतलब 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 आ गया. ओके, नाउ आई विल जस्ट ओके जस्ट सी, यहाँ पे देखो 78 है ना मेरे पास, ये 78 है. मैं 78 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. सो सी 2 3 जा 6, हाउ मच आई एम लेफ्ट विद? 7 minus 6 1 8, then 2 9 जा 18. So it is cancelled out. So after cancelling out 78 by 2, how much I am getting? 39. So you can see 39 I am getting, and when I have cancelled 120 by 2 I have got 60. Now just see, I can't cancel it out with 2. मैं फिर से इसको 2 से cancel out नहीं कर सकता. Why? Because this 39 will not be divisible by 2. ये 39 नहीं होगा 2 से divide. So I will try with 3. So 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, then 3 2 जा 6 and 0. मैंने 3 से दोनों को डिवाइड किया. सो आई एम हैविंग माई आंसर नाउ 20 13 बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय विद द सेम नंबर. सो द आंसर विल बी 20 is to 13. That is the answer we are having. Okay, now we will be discussing about the equivalent ratios. Okay, so I'll cancel it out, this one also. Let's write the topic, that is equivalent ratios. That is the topic we will be discussing now. Equivalent ratio. So when we say the ratios are equivalent or not, see, if we are having two ratios, one ratio we are given as, or two things, suppose these are 4 students I am taking, A,
B एंड C एंड D, ठीक है। मैं A और B के ना हिंदी के मार्क्स का रेशियो फाइंड आउट करूंगा। हिंदी मार्क्स, सपोज A इज गेटिंग 20, B इज गेटिंग 60, ओके, एंड C एंड D, मैं इनके मार्क्स का भी, हिंदी के मार्क्स का रेशियो फाइंड आउट करता हूँ। आई एम टेकिंग C हैज गोट 30 एंड D हैज गोट 90, okay, suppose this is the thing. See, A has got 20, B has got 60. So ratio of A to B, ratio of A to B, it will be 20 by 60. Okay, so it will be 0 to 0 cancel, 2 1 ja, 2 3 ja. So how? It is 1 is to 3. Now the ratio of C is to D, ratio of C to D. If I will be finding C to D 30 by 90, so 0 to 0 cancel, 3 1 ja, 3 3 ja. So again I am getting 1 is to 3. So that means Sir, what? it is equivalent. Yes, both the ratios, see, the ratio of A to B and the ratio of C to D, both are equal, na? So that means what? I can say both the ratios are equivalent. The above ratios are equivalent because both the ratios are equal. यहीं पे अगर देखो, यहीं पे अगर मेरे पास ऐसे होता A to B, अगर देखो मैं कहता हूँ कि A to B जो है हमारे पास, A के मार्क्स हैं मान लो 25 और B के हैं 50, और C एंड D, C और D के मार्क्स लेता हूँ, मान लो C के मार्क्स हैं 30 और D के मार्क्स हैं 40। नाउ जस्ट सी, A to B रेशियो अगर फाइंड आउट करेंगे A इज टू B, इट विल बी हाउ मच? 25 by 50, 25 by 50, 25 1 जा, 25 2 जा, इट इज 1 इज टू 2। एंड अगर हम C to D फाइंड आउट करेंगे, C to D, so it will be 30 by Sir, they 40. are not equivalent. So 0 to 0 cancel, it will be 3 is to 4. So that means what? They are not equivalent. It is not so we will equivalent write that they are ratio. not equivalent ratios. That is what we are going to write because the ratios are not equal. Ratios equal नहीं हैं. So we will write it. They are not equivalent. We'll start with the new topic, that is unitary method. I will explain it once more. एक बार मैं और explain करता हूँ, वैसे तुम लोगों को अच्छे से पता होता है unitary method. This is really very important also. Okay, so let's talk about this one, unitary method. ये तुम लोगों के हमेशा काम आएगा. This method you have to learn. Okay, unitary method, how we use this method हम वो सीखेंगे. Okay, so see, if a question is there, if 5 pen cost, if 5 pen cost rupees 60, what will be the cost of, what will be the cost of 10 pence or 12 pence? Okay, 12 pence. Now just see one thing, if 5 pence are there and they cost rupees 60, 5 pence are there and they cost rupees 60, 5 pence की cost है rupees 60, so that means what? I will write 5 pence equal to 60 and how, for how much I have to find out, मुझे find out कितने pence का करना है? 12, मुझे 12 pence का करना है. So for that what I require how much 1 pen cost, है ना. मुझे पता होना चाहिए ना कि एक पेन की कितनी कॉस्ट है. अगर 5 पेन की 60 है, दैट मीन्स 1 पेन विल बी ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 5. सो 5 1 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, सो हाउ मच? 12. जस्ट सी, 5 पेन कॉस्ट 60 रुपीज, सो 1 पेन कॉस्ट हाउ मच? रुपीज 12. 12 रुपीज में 1 पेन आता है. सो एंड हाउ मच वी रिक्वायर? We require the cost of 12 pence. So 12 pen will be how much? 12 pen will be 12 multiplied by 12. So it will be how much? 144 rupees. So that will be our answer, 144. That means what? Whenever you are writing unitary method, you are applying anywhere, what you have to do? You will just look for, देखो जितना भी तुम लोगों को दिया होगा डेटा, वट एवर डेटा यू आर गिवन विद, यू विल फाइंड फॉर 1 यूनिट. ओके, देखो यहाँ पे 5 यूनिट्स का डेटा हमारे पास था. व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाइंड आउट फॉर 1 यूनिट. ओके, 1 यूनिट का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? वी विल डिवाइड
whenever we will be finding for one unit we will divide, and whenever we will be finding for the more units like 12, 13, 14 जितना भी, then we will do multiply. Okay, what we will do? Multiply. Divide कब करना है? When we are finding for one, and multiply कब करना है? When we are finding for many. Now just see one question of your exercise. I'll tell you. See, in a computer lab there are 3 computers for every 6 students. Okay, 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24? Now just see the, okay, I'll just copy this one. मैं एक बार इसको copy कर लेता हूँ, वहाँ पे तुम लोगों को question दिख जाएगा. Okay, सर now 1 का कितना? 12 computers. sir. okay, just see, I'm solving it here. एक बार इसको यहाँ पे देख सकते हो तुम. Okay, I'll write the question first. Okay, now just it is not there, so I'll write. See, for 6 students, now just see, we are having 2 things in the question. We will look for the 2 things. One is what? The computers. One is what? Students. Okay, so first I will be writing here students and then computer. These are the 2 main things we are having in question. For 6 students, जब हम 6 students की बात कर रहे हैं तो 6 students के लिए कितने कंप्यूटर हैं? 3. So how many computers should be there for 24? For 24 students, how many computers should be there? There is a question mark. ये हमें find out करना है. Okay, so we can use unitary method. हम unitary method यहाँ पे apply कर सकते हैं. कैसे? Like this. 6 students. Sir, we need 12 computers. Yes, I know. We need 12. See, for 6 students, we will take 3 computers. 6 students, we will take 3 computers. For 1 student, how many computers will be there? 1 student के लिए 3 divided by 6. Okay, so 3 1 ja, 3 2 ja. That means 1 by 2. Okay, and for 24 students, now we will multiply. So 1 by 2 multiply by 24. So it will be 2 1 ja, 2 1 ja, 2 2 ja. So that means 12 computer is the answer. That means for 24 students we will be requiring 12 computers. That is the answer. Okay, let's see one more question. Okay, now just see this thing. If we are having 27 मान लो देर पेन्स, या फिर हम ले सकते हैं कुछ भी, 27 पेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 9 स्टूडेंट्स. ओके, 27 पेन्स अगर हम 9 स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द डेटा हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल गेट 54 पेन्स. 54 पेन्स कितने बच्चों के पास जाएंगे? देखो ना, 27 पेन कितने बच्चों के पास जा रहे हैं? 9 बच्चों के पास. तो इसका मतलब 1 पेन का निकालेंगे पहले हम. फर्स्ट वी विल फाइंड फॉर 1 पेन. सो 1 पेन कैसे निकलेगा? दिस 27 विल गो इनटू डिवीजन. मैंने बताया था फर्स्ट इन यूनिटरी मेथड यू विल बी डूइंग व्हाट? डिवीजन. Okay, so it will be 9 by 27, 9 upon 27. So you can cancel it out. अगर तुम चाहो तो कैंसिल कर सकते हो. 9 1 जा, 9 3 जा. So 1 pen means how many? 1 pen means 1 by 3. And for how many pens we need the data? हमें कितने pens के लिए चाहिए? For 54. So for 54 we will now do what? Multiplication. So 1 by 3 multiply by 54. So 3 1 ja, that means 3 1 ja, 3 8 ja. So that means 18 students will get 54 pen. If 9 students are getting 27 pens, na, that means 18 student will get 54 pens. That is what how we are using the unitary method. In unitary method, first find for 1 unit. 1 unit के लिए क्या करना पड़ेगा? Division. Then you will do the multiplication. This is okay. Now we are having one question. हम इसकी बात करेंगे. एक बार इसको समझने की कोशिश करो ध्यान से. I'll just copy this one here. Okay, this is the question we are having. ठीक है. Now just see in this question what is given.
population of two states, one is Rajasthan and one is, see I am writing all the data here, population of two states Rajasthan and UP is given. See, I will write Rajasthan, okay, then UP. What is given to us? Population. Population, how much is given? Rajasthan 570 lakh 570 and lakh. this is 1660. Okay, this is what we are given with. Then area for राजस्थान के लिए जो एरिया है 3 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर. ओके, एंड फॉर यूपी it is 2 lakh per kilometer square. Okay, this is the data we are given. Now just see how many people are there per kilometer square in both these states. How many people are there per kilometer? See, the question it is given, how many people are there per kilometer square. So how we will find out? देखो, in total population we are having 570 lakh. टोटल राजस्थान में देखो, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान. टोटल पॉपुलेशन वी आर हैविंग इज 570 lakh एंड सी व्हाट इट इज गिवन. एरिया ऑफ राजस्थान इज 3 lakh. ओके, सॉरी, इट इज 3 lakh किलोमीटर स्क्वायर. इट इज नॉट पर किलोमीटर, इट इज 3 lakh किलोमीटर स्क्वायर. ओके, this is the area 3 lakh and this is the 570 lakh. This is what? Population. And it is we have to find that how many people are there per kilometer square. कि अगर 570 lakh लोग हैं, 570 lakh, okay, and we are having 3 lakh per kilometer square, 3 lakh per kilometer, sorry, 3 lakh kilometer square, that is the area we are having. So lakh to lakh it will cancel out. Now 3 1 ja and then 570 को 3 से डिवाइड करना है, so it will be 390. So that means 190 per kilometer square, यानी कि 190 people per kilometer square are there. 190 people per kilometer square are there in राजस्थान. क्योंकि देखो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार और समझो उसको. सी, हाउ मैनी पीपल, कितने लोग हैं इन पर किलोमीटर स्क्वायर. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स को हम डिवाइड करेंगे टोटल एरिया से. ओके, टोटल नंबर ऑफ पीपल को किससे डिवाइड करेंगे? टोटल एरिया से. तो राजस्थान का जब हमने टोटल नंबर ऑफ पीपल को डिवाइड किया टोटल एरिया से, वी आर गेटिंग व्हाट? 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर. नाउ इफ आई विल बी डूइंग फॉर यूपी, अगर इस वाले को करेंगे तो इसका फॉर यूपी इट विल बी, यूपी के लिए देखो जब डिवाइड करेंगे 1660 divided by what? It will be divided by 2. So how much? 2 1 ja, 2 8 ja, 2 3 ja, 0. So it will be 830 per kilometer square. That will be 830 per kilometer square. In the second part, which state is less populated? कौन से state में कम population है? That is the answer you can easily answer. Sir, Rajasthan. Yes, Sir, the answer will Rajasthan. be Rajasthan. Rajasthan is having less population. Sir, Rajasthan, sir. Yes, that is the answer. Rajasthan is having less. Rajasthan is less populated than. This is the second part, na? Which state is less populated? So Rajasthan is less populated. So that is what you will be writing. Discussing now, we will be discussing about percentage. Okay. The next topic we are having is percentage. So I'll clear all the things from here. And I'll write the next topic, परसेंटेज. अब ये तो तुम लोगों ने ना पहले सुना हुआ है अच्छे से कि परसेंटेज, जैसे हम लोग अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं कि कितने मार्क्स आए, कितने आए. सपोज सी, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं. इफ़ आई एम गेटिंग 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 I am getting. So how I will find the percentage? See, I will just 40 I am getting, how from how much I am getting? 50, and you have to multiply by 100. Whenever you are finding percentage, you will be multiplying by 100. So 0 to 0 it will cancel out. So 5 1 ja, 5 2 ja,
20. So it will be, देखो 20 into 4, how much we are getting? 80%. That means I am getting 80% marks. If my marks are 40 out of 50 na, that means I am getting 80. Same case if I am getting 35, अगर मेरे 35 marks आते out of 50, then how much percentage I will be having? तो 0 again, 0 to 0 cancel, 5 1 ja, 5 7 ja, so 7 into 10, then I will be getting 70%. Okay, so this is how you will be finding the percentage. Okay, I'll clear this one. एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर. Okay, now just see, if I am saying that out of a class of 40 students, ठीक है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ दीज 40 स्टूडेंट्स क्रिकेट जो खेलते हैं, दोज हु प्ले क्रिकेट आर 24 एंड दोज हु प्ले फुटबॉल आर 16. ओके, एंड आई वॉन्ट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट. मुझे परसेंटेज चाहिए उन बच्चों का जो क्रिकेट खेलते हैं. सो दैट मीन्स हाउ आई विल बी फाइंडिंग आउट? 24 आउट ऑफ 40, क्योंकि देखो ना टोटल क्या है? 40. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40, तो ये हमेशा डेनोमिनेटर में. और कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? 24 मल्टीप्लाई बाय 100. सो दैट मीन्स 0 to 0 कैंसिल, 4 1 जा, 4 6 जा, सो 6 into 10, दैट मीन्स 60% स्टूडेंट्स आर प्लेइंग 60% students are playing cricket. And how many are playing football? So 16 divided by 40 multiply by 100. So it will be 0 to 0 cancel, 4 1 ja, 4 4 ja, 4 into 10. That means 40% students are playing football. So this is how you will be finding out the percentage. Okay. See this one, just see this one. We are having a pizza and I am eating only one part of it. So in percentage how much I am eating? कितना पार्ट मैंने ईट किया है? See, if you will write this thing in fraction, 1/4. 1/4 is the fraction. If I will be writing this thing in fraction, that means what? It will be 1/4, because I am eating one part out of the 4 part. But what percentage it will be? Then I will 25. multiply it with 100. So 4 1 ja, so it will be 25%. So this is what? This is how you will convert a fraction into what? A fraction to percentage. अगर तुम fraction को भी percentage में 25%. है ना, suppose you are given, देखो अगर एक अलग से fraction ले लेते हैं हम, suppose we are given with 3/8. Okay, this is the fraction we are given, 3/8, and we want to convert it into percentage. So 3/8 we will multiply by 100. Okay, so 4 2 ja 8. एंड 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? इट विल बी 25. देखो 4 से 8 को डिवाइड किया 2 आया, 4 से 100 को किया 25. सो 25 into 3 हाउ मच? 75 एंड अपॉन 2. सो 75 अपॉन 2%, एंड इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो हाउ मच? 2 3 जा 6, 2 7 जा 1/2%. दैट इज आवर आंसर वी विल बी गेटिंग. There also same thing, if we are given with any number that is 5/4 and we want to convert into percentage, so 5/4 multiply by 100, so it will be 4 1 ja, then 4 2 ja 8, 4 5 ja 20, so 25 into 5 how much? It will be 125%. So you can convert any fraction to percentage. किसी भी fraction को तुम percentage में convert कर सकते हो by multiplying with what? 100. You have to multiply with 100. And now one more thing, if you have to convert a decimal, like in your second question of your textbook 8.2, decimal to percent, if you have to convert from decimal to percent, then what you will do? See, if I am given, अगर मेरे पास एक percentage दिया हुआ है, sorry decimal दिया हुआ है 2.4. 25. Okay, 25 करेंगे सर हम. just see, if we are given with 2.4 and we want to convert it into percentage, इसको percentage में convert करना है. So what I will do? I will remove this decimal and take, how many zeros I will take with this one? 1 0. Why? Because after the decimal only one digit is there. So now we are having 24/10. Now what it is having? We are having a fraction ना. So fraction को कैसे convert करते हैं?
multiply by 100, so it will be 240%. ओके देखो, जब हम डेसिमल से परसेंटेज में करते हैं ना, जब हमें किससे करना है, डेसिमल टू परसेंट, डेसिमल से हम पहले किस में जाएंगे, फ्रैक्शन में, और फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई, देन वी विल कम टू परसेंटेज। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वी आर हैविंग 0.35, देखो ये है हमारे पास 0.35, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन, सो इट विल बी, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 2 डिजिट्स आर देयर, आफ्टर द डेसिमल वी आर हैविंग 2 डिजिट्स, सो इट विल बी 35/100. Okay, now we are having a fraction, so I will multiply it with 100, so 100 to 100 cancel out, we are having how much, it will be 35%. Okay, one more example we will take, एक और example ले लेते हैं, चलो इसका ही, because this is important one. See, if I am having one, suppose this is the one, 1.325, this is the decimal we are given, 1.325, in decimal it is given, so one, see after this 1 point is there, and how many digits are there after there, this 3 digits, so I will be writing 1325 and upon how much, 1000, I will be taking 1000, क्योंकि देखो 1 2 3 digits are there, so 3 zeros should be there. Okay, and multiply now it with 100, so 0 to 0, 0 to 0 cancel out, so we are remaining with what, 1325 divided by 10, and if we will take again this 10 we will turn into decimal, so that will be after how many digits, one digit, so it will be 132.5%. that is our answer we will be doing. This one also you can see, if we are given 35/40 and you want to convert in percentage, multiply with 100, 0 to 0 cancel out, so now 2 2 ja 4, 2 5 ja 10, now we will multiply this 35 by 5, so 5 5 ja 25, then 5 3 ja 15, 15 plus 2 17, 175/2, and we have to write it in percent na, matlab mixed fraction you can write, 2 8 ja 16, then 1 5, 2 7 जा 14, 1/2%, 87 1/2, या फिर तुम 87.5 भी लिख सकते हो, अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे ना 175 को, 87.5 it will be, so you can write any of the answers.